Hello students, welcome once again to this class, and today I am discussing about the biological classification, which is chapter 2 for CBSE students class 11. And in this chapter you have to study in little detail about the biological classification. So classification, as we all know, is dividing the organisms, living organisms, into different groups and kingdoms. So initially it was the two kingdom classification, which was given by Linnaeus, the great scientist, and he gave two kingdoms classification. So that means ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के का जो क्लासिफिकेशन है, इसको दो किंगडम में बांटा गया. वन इज प्लांट किंगडम प्लांटी एंड अनदर इज किंगडम एनिमलाई. कहने का मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स दो किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया. बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन दिस, देयर वर सम कंफ्यूजन बिकॉज some scientists thought that it is not foolproof or it is not self-sufficient to explain the classification properly, because there are some organisms which are having features of both plants and animals. There are some creatures which are entirely different in cellular structure. So what should be done then? Where these organisms should be kept? Like in fungus, there is a cell wall which is not made of cellulose, but it is made of chitin, but cell wall is there. So cell wall is a prominent and very important feature of plant, so it should be kept in the plant kingdom, but it cannot be kept in plant kingdom because it is heterotroph or heterotropic. It does not perform photosynthesis. Photosynthesis में नहीं होता है, इसलिए इसको आप प्लांट्स में नहीं रख सकते और एनिमल में भी नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग ए सेल वॉल विच इज़ अ फीचर ऑफ प्लांट्स. सो ये कन्फ्यूजन है. लाइक दिस देयर आर अदर कन्फ्यूजन्स ऑल्सो. लाइक इन बैक्टीरिया देयर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. दैट सेल इज यूनिसेलुलर बट इट इज हैविंग न्यूक्लियस विच इज़ नॉट एट ऑल क्लियरली डिफाइंड, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको आप एक साथ अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं रख सकते हैं. इट हैज़ टू बी सेपरेटेड. सो दीज वेर द इश्यूज विच केम अप इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन. फिर साइंटिस्ट लोगों ने बेस्ड ऑन अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स दे फ्रेम्ड सम अदर किंगडम्स. तो इसमें R.H. विटेकर जो थे, उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया, और ये 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमले. सो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमले ये तो पहले से थे. 3 और ऐड हुए इसमें, मोनेरा, फंगाई एंड protista. So these are the 3 kingdoms which are added into the 2 kingdom classification. Now these were done on the basis of the cell type, the cell wall, the cellular structure, body structure or organization, the nutrition mode of nutrition, etc. So these were the important features which were taken in the 5 kingdom classification. अब अगर आप इसको एक टेबल बना के इसमें देखते हैं तो सबसे पहले आता है सेल टाइप. तो इसमें मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, और बाकी जितने हैं सब यूकैरियोटिक हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है. प्रोटिस्टा, फंगाई, plant and animals. So all these 4 kingdoms are having eukaryotic cell. तो इसलिए ये सेल टाइप में ऐसे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फिर दूसरा है सेल वॉल. सेल वॉल में मोनेरा में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, इट इज़ मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, लेकिन सेल वॉल है. फंगस में भी सेल वॉल है विच इज चिटिन का बना हुआ है. प्रोटिस्टा में सम ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग सेल वॉल, एंड इन प्लांट सेल वॉल इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी प्लांट सेल, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है. सो दीज आर दी सेल वॉल
criteria of cell wall for classification. And then comes the body structure or cellular organization. Monera is bacteria. Bacteria is unicellular, essentially. Protista is also cellular, and this fungi is multicellular, and some separate loose tissues are also there. Plant cells are all multicellular, and plant cell are definitely all these we have talked about cell wall status. Then body organization we also have talked. Then we are talking about nuclear membrane. Prokaryotes don't have nuclear membrane because their nucleus is not well defined, and then your protista also protista does have a nuclear membrane. Nuclear membrane is present there, and fungi is also having nuclear membrane, because these all are eukaryotes, so they are having nuclear membrane because nucleus is well defined. Body organization in Monera, cellular, protista so cellular, and your fungi is multicellular, loose tissue is also there. Plants में टिश्यू भी है, ऑर्गन्स भी है, बट एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी है हमारे एनिमल्स में और ऑल्सो इन ह्यूमन बीइंग. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सी दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स. थोड़ा सा लेंदी है ज़रूर, लेकिन आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है और याद रखना है. सो न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर क्लासीफाई करें तो मोनेरा क्या है? मोनेरा बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या है? मेनली हेट्रोट्रॉप है, पैरासाइट और सैप्रोफाइट. बट देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर autotroph also. They are having chlorophyll, so they make their own food, and they are called the blue-green algae or cyanobacteria. तो दोनों ही मोड है, ऑटोट्रॉप भी है और ज़्यादातर हेट्रोट्रॉप है. और इसमें प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दोनों ही है. और इसमें आपका फंगस में इज ऑल हेट्रोट्रॉप बिकॉज दे आर saprophytic or parasitic, and plants are the only autotrophs exclusively because they can perform, green plants can perform photosynthesis, so they are exclusively autotroph. Or animals are exclusively heterotroph, maybe parasitic, maybe saprophytic, maybe in symbiosis, and also maybe holozoic. So these are the क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें जो 5 किंगडम है इसके बारे में मेन फीचर्स जो है, सैलिएंट फीचर्स आपको याद रखना है. तो पहले बात करते हैं मोनेरा का, जिसमें बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया आप सब जानते हैं इज़ यूनिसेलुलर, इज़ प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर वेल डिफाइंड नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनिज्म सेल आपका ऑर्गेनेल भी नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है. हाँ, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बैक्टीरिया. और स्ट्रक्चरल बेसिस पर देर आर सम टाइप्स, जैसे कि रॉड शेप्ड का नाम सुना आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा. बैसिलस जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, एंड ऑल्सो योर सल्मोना टाइफी, दीज आर दिस बैसिलस टाइप रॉड शेप. फिर स्पेरिकल भी है, राउंड शेप बैक्टीरिया भी पाया जाता है जिसको स्ट्रेप्टोकोक्काई या स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जाना जाता है. कुछ कॉमा शेप्ड भी होते हैं, कॉमा जैसे लिखा जाता है उस शेप का, जैसे विब्रियो कोलेरा का जो जर्म है, जो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप्ड है. स्पायरल भी है, स्पायरेलियम. तो दीज आर ऑल दी शेप्स, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. इसके अलावा बैक्टीरिया को कुछ और भी ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है. द कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और वो उसी में माइकोप्लाज्मा भी है.
तो आर्के बैक्टीरिया, एक्चुअली ये बैक्टीरिया चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं है। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको आर्की बैक्टीरिया में रखा गया है। जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर हो जहाँ बैक्टीरिया है तो वो आर्की बैक्टीरिया होगा। उसी तरह हॉट फाउंटेन्स में अगर बैक्टीरिया है वो भी आर्के बैक्टीरिया होगा। और फिर अगर मार्शी लैंड में है तो वो भी आर्के बैक्टीरिया होगा। तो मार्शी लैंड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मेथनोजेंस बोलते हैं, और ये जो है रूमिनेंट्स के गट में भी पाया जाता है। सो इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स दिस आर्के बैक्टीरिया is present, which is called methanogens, and it produces methane, which is responsible for biogas. So ये ruminants में पाया जाता है। Archaebacteria, which is present in the marshy land, is also present in the gut of the ruminants, producing methane. That is why they are called methanogen. And coming over to the other group, that is the यू बैक्टीरिया, जो कि हमने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉप हैं, जिसमें क्लोरोफिल है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसको यू बैक्टीरिया में रखा गया है, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें कुछ और बैक्टीरिया हैं जैसे नोस्टॉक है, एलेबाना है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया इसमें हैं जो कि नाइट्राइट और नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द यू बैक्टीरिया टाइप: नोस्टॉक, एनाबेना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया विच इज ब्लू ग्रीन algae विच इज द ऑटोट्रॉप। सो दीज आर ऑल इन यू बैक्टीरिया। फिर हम आते हैं द कॉमन बैक्टीरिया ग्रुप में, जो कि कॉमनली पाया जाता है, बहुत एमिडेंस में पाया जाता है, जिसका सेल वॉल बहुत प्रोमिनेंट होता है, और जो कि हार्मफुल और हार्मलेस भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है हमारे लिए। जैसे वी मेक कर्ड आउट ऑफ मिल्क बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, एंड देन इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन मेडिसिन इंडस्ट्री, in leather industry, in tea industry, all these bacteria are used. मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रिसर्च वर्क में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू मेडिसिन। सो दीज आर द ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ बैक्टीरिया। और हार्मफुल बैक्टीरिया में देयर आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लाइक योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, योर Salmonella typhi, Vibrio cholerae, which are producing TB, typhoid and cholera respectively. So these are all very very harmful bacteria. टिटनस का भी बैक्टीरिया, टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है, जिसको हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं। तो ये जो टिटनस है, दिस इज कॉल्ड your tetanus bacteria, Clostridium tetani. So like this, there are harmful bacteria also. And we come to the smallest cell, bacterial cell, that is mycoplasma, which can survive without oxygen and which does not have any cell wall. Bacteria में ऐसे cell wall होता है, but mycoplasma में cell wall नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में, और फिर दूसरे वीडियो में हम दूसरे किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इनका सेलिएंट फीचर्स है। और जितना भी इनपुट हमारे से पॉसिबल होगा, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड देम, so that it helps you in your studies, in the total understanding of this chapter. So it was, as usual, very nice talking to you. Thank you very much, and wish you the very best. God bless you all. Thank you so much.